Assalamu alaikum and hello everyone. So today's video is about when keyword, when to use when keyword basically. तो बेसिकली ये एक रिक्वेस्ट आई थी एक यूज़र ने जिन्होंने कमेंट किया था मेरी एक वीडियो पे कि व्हेन यू यूज़ दी व्हेन कीवर्ड व्हाट इज़ पर्पस ऑफ दी क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम व्हेन कीवर्ड कब यूज़ करते हैं। सो व्हेन टू यूज़ व्हेन कीवर्ड। For that reason, I have planned a short demonstration, right? So setup तो मैंने सारा करके रखा हुआ है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैं एक टेक एंड टॉक सोल्यूशन यूज़ करता हूँ सारी डेमोस्ट्रेशंस और कॉन्सेप्ट्स के लिए। द रीज़न ये ऑलरेडी गिटहब पे एक रेपो बनी हुई है और जो भी हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं मैं इसको वीडियो के बाद पुश कर देता हूँ रिपोजिटरी में। सो एक नया प्रोजेक्ट मैंने ऐड किया कॉन्सेप्ट्स के नाम से, और आज हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो है व्हेन कीवर्ड, राइट। सो बेसिकली व्हेन कीवर्ड सी शार्प में 6.0 से इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। सो इसका यूजेज देख लेते हैं क्योंकि नॉर्मली कोड बेसिस में व्हेन कीवर्ड बहुत कम देखने को मिलता है। सो इसका यूजेज कोई ज़्यादा नहीं है। बेसिकली 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन कैच ब्लॉक, राइट। सेकंड वन इज इन स्विच स्टेटमेंट्स, right, and third one is switch expression, right. So switch expression तो C# 8 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो ये स्विच एक्सप्रेशंस में भी यूज़ हो सकता है। बेसिकली अगर हम अपने स्विच स्टेटमेंट को शॉर्टकट तरीके से कोड करें तो वो स्विच एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं हम उसको। सो व्हेन कीवर्ड का पर्पस वही है जो कि स्विच स्टेटमेंट्स में है, राइट। अब इन तीनों एग्जांपल्स को वन बाय वन देख लेते हैं। उसके लिए हम व्हेन एग्जांपल 1.cs के अंदर एक मेथड बनाते हैं। लेट्स नेम इट पब्लिक एंड इट्स लेट्स से इट डज रिटर्न स्ट्रिंग process input, right. And for the purpose of the demonstration of when keyword, let's take object as input, right, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि कोई जेनेरिक इनपुट आए हमारे पास और हम उसको प्रोसेस कर सकें। और बेसिकली ये एक यूज़ केस है कि हम उसके ऊपर स्विच स्टेटमेंट लगा सकते हैं, राइट। सो स्विच से पहले हम ट्राई कैच को देख लेते हैं। एंड लेट्स से आई एम गोइंग टू add a try catch here, and let's say this is string, right, and let's cast this input as string, right, and let's return that string, right. सो और यहाँ पे हम कहते हैं कि जी हमारा कैच ब्लॉक है, एंड कैच ब्लॉक में हम जेनेरिक एक्सेप्शन कैच करते हैं और एट द एंड यहाँ पे हम कहते हैं रिटर्न string dot empty, right. So and let me import the required class as well. सो राइट, सो ये है हमारा एक बेसिक ट्राई कैच, राइट। और हम इसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं example 1 is equal to new example 1, राइट। और कोड को थोड़ा क्लीन करने के लिए फॉर द ब्यूटी ऑफ द कोड लेट्स यूज var कीवर्ड। सो that makes that give us a more cleaner look to our code. So let's call our method return value
and let's call our example1 dot process input, and straight away let's pass null keyword, right? And inside this one, let's say we are also doing the string length is, and let's use that string interpolation, and for that reason let's use, so to avoid concatenation of string, there is a concept of string interpolation where we put $sign in front of that string, and we can easily use the variables inside that string value, right? So that serves same purpose as plus sign with attaching multiple string here, right? So okay, हमने क्या किया कि हमने dot length call कर लिया, so it will throw an exception definitely because we can't get its length because it's already a null, right? And for the null reference, if we call for its length property, it will throw null reference exception. So let's give it a try and see, and before that let's type console.read key here in case we want to make our program to stop for input, right? So it's not giving us any exception because we catch that exception inside that method. Okay, so for that reason, let's say we want our exception and we want to categorize our exception and we want to process specific exceptions right inside that catch block. So for that purpose, what we can do, we can use when keyword here, right? And with when keyword we can say when exception dot message, and we can we can write any expression here. We can write logic against any property of this exception. तो हम कुछ भी जो है वो यहाँ पे अपनी लॉजिक लिख सकते हैं जो कि हम वैलिडेट करना चाहते हैं, राइट? सो इफ आई कॉल फॉर expression dot message dot contains abc, right? Just anything, then this catch block will be executed, otherwise the exception will not be caught, right? If now we can give it a try, तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम ने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया क्योंकि हमारी ये व्हेन कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, राइट? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, राइट? लेट्स से ये मैसेज है और हम इस मैसेज को यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर मैसेज में रेफरेंस का कीवर्ड है तो फिर ये कैच ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, और नहीं तो एक्सेप्शन कैच ही नहीं होगी, सॉरी. Okay, right? You can see no exception is thrown straight away, and this is quite nice and simple. So this is how we can write multiple catch block with even same kind of exception to create specific blocks for handling over cases, right? And we can write as many as catch blocks we want, right? So जो जनरल प्रैक्टिस है वो ये है कि हम एट द एंड जेनेरिक एक्सेप्शन भी हैंडल करते हैं इस तरह से. सो कि
अगर हमारा कोई भी केस रन नहीं हुआ तो एट द एंड exception should be caught here inside that catch block. So if we again write abc here and give it a run, you can see exception is again caught successfully and no exception is thrown, right? So this is the first use case of over when keyword. So basically by the definition, when keyword is a contextual keyword which can use to filter over exceptions. You can see we are filtering over exceptions in this way. We can use this when keyword to filter over switch statements, right, over switch cases. So this is the use of when keyword, right? And definitely it makes our code more cleaner and easy to understand, right? And we can get rid of all those if else and a lot bunch of unnecessary code. So next हम देख लेते हैं कि या केसेस किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, हाउ टू यूज व्हेन कीवर्ड इनसाइड अवर केसेस in a switch in our switch statement, right? So for that reason, let us remove this code from here, right? And let's say, so this is the case of switch statement, and let me type switch, put over input inside that switch statement, and let's start writing the cases. So in cases when we want when we want to use our when keyword, what we can do is, in that particular scenario, let's say we want that to check if that input is a string. If it is, and its length is greater than 0, right, then we want our case to be executed. So for that reason, let's say we cast that input to a string variable, temp variable, right? And let's say when temp variable dot length is, or even let's say string dot is null or empty, right? And we are going to use not in front of this, and let's give it over temp variable, right, in this way. And let's return string from here, and again we are going to use string interpolation. This is a string with length of temp variable dot length, like this, right? And what does it says? We are missing the colon here. Okay, and right, and let's say by default, let's handle the default case, turn no case matched, right? Easy and simple. So this was the second use case when we want to categorize our we want to further filter our cases, and we want to check the value that is matched our case statement, but we still want to further filter, apply filter on that value. So this is how we can write any condition here,
which does return true or false. So we can check its length, we can check if it's null or empty, we can compare it with any value, anything that is, you know, or even we can call direct function here, which is doing some processing and returning true or false. So we can do anything that is returning boolean value, right? Let's add for the further understanding, let's add another case here for the integer. Let's say the input was an int, we say it is a temp variable, and what we can say instead of all of these, and let's say the temp variable is greater than 0, right? This is an int and its value is, and let's use string interpolation again, right? So you can see how beautifully we have handled all these three cases in just simply in 6 or 7 lines, right? Okay, let's give it a try and give it some input to see how it perform. For the first type, let's give it a string. This is a random string. Okay, and just run this one. And sorry, we are not showing the return type on the console. Let's write console dot write line return value, right? Let me run again. Okay, you can see that this is a string with length of 23, right? Okay, let's give it an integer, let's say 9, right? And run again. This is, you can see that it is shown that this is an int and its value is 9. Great. So this was the second use case, when to use when keyword, right? And the third use case, as I told earlier in the start of the video, that third use case is to use switch expressions. So switch expressions are introduced in C#8. That is simpler way to write over switch statement cases, right? And it's nothing to do with when keyword, because when is going to use in the same way as it is going to use here. So I have that Visual Studio 2019, and it's already showing me the help to convert switch statement to expression, right? So as soon as I click on this, you can see that all those 6-7 lines are converted into just 3 lines, right? Isn't that awesome? So in another video, we will see how we can use switch expression in different use cases with different practical use cases, right? So you can see when keyword is getting used in the same context as it was used in previous form of switch statement, right? So these are the 3 types and 3 scenarios where we can use when keyword, right? I think it's clear now, and now we can start using our when keyword inside our code base to make our code more beautiful and understandable. And of course it will, reduce our code base size significantly. So I think हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. होपफुली अब आइडिया तो हो गया होगा कि किस तरह से when कीवर्ड यूज़ किया जा सकता है. सो इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट्स के साथ या किसी नए कीवर्ड के साथ हम आते हैं. सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय.